हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ विद अकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग बाउंडेडनेस थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम पढ़ेंगे और प्रूव भी करेंगे इसको। तो थ्योरम क्या कहती है? अ फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस in an interval a comma b, this is a closed interval a comma b, और obviously it is a finite interval, is bounded in that interval। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, तो वो हमारे पास बाउंडेड भी होता है। ओके, दैट विल बी आल्सो बाउंडेड। तो दैट इज द वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो लेट अस प्रूव, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए कामा बी के अंदर, ठीक है, तो वी कैन ब्रेक, है ना। हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस, लेट अस राइट हियर देन वी स्टार्ट प्रूविंग। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है इन दिस इंटरवल, इन दिस क्लोज इंटरवल ए कामा बी, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सब इंटरवल। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव करा था। और इन सारे के सारे सब इंटरवल्स, मतलब अप टू फाइनाइट सब इंटरवल, such that if we just get some point, this is x I 2 points, this is x dash x double dash 2 points अगर हमने लिया, such that it will be definitely, अगर हम कोई एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, तो उसके लिए हम इसको इसको हम ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे सब इंटरवल्स में। such minus f x double dash is less than epsilon, this property we will be have। तो डेफिनेटली we will get some finite division, मतलब हम finite number of subdivisions will be get। तो इन द फर्स्ट थ्योरम हमने ये सीखा था। अब दूसरी थ्योरम में हम लोग ये सीखेंगे कि फंक्शन हमारे पास, अगर ये तो लिखा है फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस इन एन इंटरवल ए कामा बी इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। ओके, अब जो फर्स्ट थ्योरम पढ़े थे उसका यूज करके हम इस प्रूफ को लिखेंगे। तो लेट अस प्रूव द थिंग्स। So you can just write here, since function is continuous, तो हम जो फर्स्ट थ्योरम है वो लगा सकते हैं। since fx is continuous, you can just write here, since fx is continuous in the interval a comma b, therefore by the theorem 1, by the theorem 1 that was Borel's theorem for continuity, हमने को पढ़ा था, है ना, इट वाज द बोरेल थ्योरम। तो जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो यू विल जस्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, है ना। ठीक है, सिंस वी हैव फॉर द कंटीन्यूअस फंक्शन वी हैव द, आपको पूरा स्टेटमेंट ऐसे लिखना होगा, ठीक है। सिंस इफ एफ एक्स इज continuous in the closed interval closed interval a comma b, okay, then given a positive number of epsilon can be divided, the interval can always be divided up to finite number of subintervals, such that we have, this is fx dash minus fx double, where these points, where this x dash and x double dash are the points in the same interval। तो आपको प्रीवियस थ्योरम पता ही है कि वो क्या कह रही है, तो हम डायरेक्टली वी कैन से दिस बाय द बोरेस थ्योरम। ओके, या फिर थ्योरम 1। एंड इफ यू आर राइटिंग सॉल्यूशन इन एग्जाम, तो यू विल हैव टू राइट मेंशन दिस थ्योरम कि अगर एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल, then if which some have a positive number of epsilon, so for that we can able to reduce the sub intervals finitely, है ना। and in that case we have the condition f x dash minus f x double dash less than epsilon। so we can just have, इसको हम अगर इसको कुछ कंडीशन मान लेते हैं, कंडीशन स्टार, देन हमको कह दे कि ये कंडीशन जो है, दैट इज द कंडीशन
now we can just say, so we have this theorem, so we can just say we can break from here, we can just break, we can break up to interval this a comma b into a finite number of sub ठीक है। तो हम फाइनाइटली इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने ये माना कि दीज सब इंटरवल्स आर दिस वन, this is a of x1, this is the interval, and this is your x1 comma x2, and this is up to हमने कहा कि हमारे पास एक epsilon थे, if this epsilon, let epsilon positive there, so for that if we break this interval like that, this is direction minus 1 up to b, and in each of which, इन सभी के अंदर each of which equi star condition star, you can just say condition star satisfied. Okay, so here we have this condition, this condition will be satisfied in this interval, क्योंकि हम एबल टू, अगर हमने कोई एक एप्सिलॉन लेके चले तो उस एप्सिलॉन के लिए हमने उस इंटरवल को डिवाइड कर दिया, एंड डिवीजन इज फाइनाइट, है ना, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। आफ्टर अ स्टेज we will get such sub intervals in that कि f x dash माइनस x डबल डैश, दो पॉइंट्स हम किसी इंटरवल से अगर ले लें और उनके बीच का डिफरेंस लें, that difference will be definitely less than the epsilon. We will able to find such intervals, and that such sub intervals is finitely divided, है ना, मतलब finitely we will able to get. Okay, so we have this condition in each of the every intervals. Okay, so let us see वन बाय वन इंटरवल्स, हर एक कंडीशन एक इंटरवल, अगर हम देखते हैं इस इंटरवल के लिए देखते हैं कि फंक्शन बाउंडेड मिल जाएगा हमको, इस इंटरवल के लिए बाउंडेड मिल जाएगा, इस इंटरवल के बाउंडेड, फिर उनको अगर हम कोलैप्स कर देंगे, सबको एक साथ एडजस्ट कर देंगे, तो वी विल सी कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल ए कमा बी था उसके अंदर हमारे पास फंक्शन कैसा है, वो हमारे पास बाउंडेड निकल आएगा, है ना। तो लेट अस प्रूव इट। सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन। नाउ in the interval that is your a comma x1 we have, or we can rearrange the things and let us see. So we have if fx is here, तो fx को आप ऐसे लिख सकते हो, सपोज एक बार आप एफ ए जो है, जो भी इनिशियल पॉइंट था एफ ए, है ना, एफ ए को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसी में हमने एफ ए यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दिया, तो कोई वैल्यू में तो चेंजेस हुआ नहीं, बट वी कैन जस्ट राइट हियर। ओके, सो नाउ अब अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज इफ आई एम जस्ट टेकिंग mod of fx, okay, so it will be you know that this equals to mod of fa and plus का this is fx minus the fa. Okay, so from here you will get this is mod of fx is less or equal to this is mod of fx minus the fa. So we know that in this interval it is also continuous and this satisfies the condition. So this x is any point on this interval and a is fixed, then it will be less than epsilon, है ना। So you can just say this is mod of fx is less or equal to mod of fa, ये तो है ही है, प्लस इसकी जगह पर हम epsilon यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है, बाई द थ्योरम बाई। ओके, सो वी हैव दिस, ठीक है, तो इन पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पर x की जगह पर x1 पुट कर दें, x1 है ना, पॉइंट x1 उसी इंटरवल के अंदर है, तो इफ आई एम जस्ट पुटिंग दिस इज x इज इक्वल टू x2, so you will have this mod of f of x1 is less or equal to fa plus epsilon. Okay, we can just have equation 1. Okay, again let us see in the interval second, again in the interval that is your x1 comma x2 we have x1 comma x2, so we have this is your f of x
ओके, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस का एफ ऑफ एक्स एंड माइनस एफ ऑफ एक्स, लाइक दिस इक्वल दिस. So from here you can just also say this is mod of x is less or equal to mod of x1 and plus this is mod of fx minus mod of fx, है ना. आप सिमिलरली जिस तरीके से हमने पहला करा वैसे ही हम यहाँ पर भी हमने एफ ऑफ एक्स वन को ऐड करा, एफ ऑफ माइनस ऑफ कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ ऑफ एक्स वन को, एंड देन यू कैन जस्ट टेक द मॉडुलस एंड फॉर दैट यू कैन जस्ट टू. अब इस मॉड ऑफ एफ एक्स वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एफ ए plus epsilon and this will be less than epsilon, then you can just say this is epsilon. Okay, and clearly you can just have a strict notation because if this is less than epsilon है ना, fx minus fa is less than epsilon, तो इधर पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करते हैं तो स्ट्रिक्ट नोटेशन आ जाता है. तो we have here strict notation, you can just say this is less than, है ना. तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा that is mod of fx इज लेस. ठीक, हमको यहाँ पर ये चीज मिली. और सिमिलरली इन पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पर x2 which is less than fa plus 2 times epsilon, clear or not, modulus is there. So we have वहाँ पर मॉड था ना, you can just type this mod. Mod का मतलब we have using the positive value of the solution at this point. Okay, so we have this. So अगर हम कोई इक्वेशन सेकंड कर दें और सिमिलरली अगर हम प्रूव करने चले जाएं, we can say proceeding similar way. In this way we have in the interval x n minus 1 comma b. ठीक है, so from here you have this is mod of fx is less than mod of fa and plus n into epsilon. ठीक है, ऐसे मतलब आप जब सेकेंड इंटरवल में लोगे, थर्ड इसी तरीके nth इंटरवल में जब लोगे तो you will get this is n times of epsilon, and from this you can just say, so in this whole interval we have, है ना, हर एक इंटरवल में फाइनाइट, so thus you can see, thus it follow that in the whole interval a comma b, this fx is definitely modulus of fx, mod of fx is less than mod of fa and plus n epsilon. ठीक, so clearly it is the fa have the continuous, it means have a finite value, है ना, at the point a point पे finite value है, इसका मतलब ये finite है, ये n times epsilon अगर multiply करेंगे तो you will get also finite value, and sum of this is finite. It means the modulus of fx is less than some finite value, it means it is bounded. So this implies, which shows that okay, so this is mod of fx is less than mod of fa plus n times epsilon. Okay, so this is the proof of this result. अब हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल क्लोज इंटरवल a कमा b के अंदर फंक्शन हमारा बाउंडेड भी है. ठीक है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर तो वो बाउंडेड भी होता है. क्लोज इंटरवल शुड बी फाइनाइट, है ना, वो फाइनाइट तो हमारे पास क्लोज इंटरवल है, फाइनाइट इंटरवल है. तो दिस इज द hopefully we have just done this. ठीक है, तो कैसे करा हमने, क्या करा कि हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक, अगर हमने एक एप्सिलॉन लेके चले, उस एप्सिलॉन के लिए हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया और सब इंटरवल हमारा फाइनाइट है. तो फिर हमने हर एक इंटरवल में देखा कि धीरे धीरे हम इंटरवल इंक्रीज कर दे. फर्स्ट इंटरवल में देखा तो वी हैव दिस मॉड ऑफ fx which is less than mod of fa plus epsilon and it shows it is bounded और उसके लिए हमने x की जब x1 पुट करा तो हमारे पास mod of fx1
इज लेस देन मॉड ऑफ एफ प्लस एप्सिलॉन निकला। उसके बाद हमने उसको सेकंड इंटरवल के लिए यूज करा, थर्ड के लिए, फोर्थ, फिर nth इंटरवल के लिए जब यूज करा तो वी विल गेट दिस रिजल्ट, mod of fx is less than mod of fa plus n times epsilon, and that gives you कि in a whole interval this mod of fx is always less than this thing. It means it is bounded, है ना? So it means fx is the bounded in that interval. So this is the process how to prove the theorem. तो होपफुली कि ये रिजल्ट, ये थ्योरम समझ में आएगा। और फिर हम हमेशा रिजल्ट हमेशा दिमाग में आपके होना चाहिए कि इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड देयर इज अ क्लोज इंटरवल, इन दैट क्लोज इंटरवल फंक्शन विल बी बाउंडेड एज वेल। ओके, तो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।